अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने पर खुद को नोबेल इनाम का मुस्तहिक करार दे डाला। न्यू जर्सी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ईरान से मुज़ाकरात से कबल जंग बंद करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, तेहरान से बात करके देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसराइल को रोकना बहुत मुश्किल होगा। अमरीकी असासों पर हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. We'll see what happens.